So hello everyone. Today we are going to discuss about the recursion in C programming. Before that, we have already studied about the function, what are the different types of functions, how we are going to declare the functions, what are the uses of functions, what are the advantages of functions, and so on. So basically, what it means a recursion and why we are going to use a recursion. Okay. So recursion is defined as it is a process in which a function call itself directly or indirectly is called a recursion. If you're talking about the function, simple function, if you're defining a simple function, the function is a set of executable statement written for to execute a specific task. And always we are going to write the function outside of the main program. And whenever you want to use the definition of that particular function, so you have to call that function into your main program. For example, suppose if you want to access the particular function 100 times into a main program, so what you're going to do, you have to call the same function 100 times, or simply you have to put the particular function into your for loop. But recursion, it is the process, it is somewhat little bit different. The recursion, it is the process and is the function call itself. The function which is called itself again and again till the particular condition is true. It means that there is no need to call the function separately more than one times. You have to write down the function only for a single and same functions you have to call within that particular function is known as a recursion. So recursion, it is a process or it is a function call itself directly or indirectly is it is called as a recursion. And a corresponding function is called as a recursive function. The corresponding function is called as a recursive function. Using recursive algorithm, we can solve certain problems also. Suppose if you're talking about the simple example, if you want to find out a factorial, so while you're finding the factorial of a particular number, the same process you're doing again and again, again and again. And if you want to calculate if you want to calculate the factorial of a particular number, so same process you are repeating. So instead of repeating the same thing, just you have to write on the recursive function. So in the recursive functions, your function will call automatically till the particular condition will get true. If the condition is true, the function will get executed. Once the condition will get false, your function execution will get stopped. So recursive meaning is the function call itself, the function call by itself or function call within the function. Because the function within the function, suppose if you're having the xyz function, under that function you have called xyz function again. So that means it is a recursion. So recursion, it is a function or recursion function is a function which call itself. So how we will write the recursive function? We will see simple example. So here we have created one function. The name of the function is recursion. The function name can be anything as well. Whenever we are going to write down the function name can be anything. So function name can be anything. Suppose we have written one function over here. The data type is integer. That means return type is integer. The name of the function is recursion. You can give any name to the function. There is no any type of restrictions. You have to give a particular name only. You have to give any name. But remember, always name should be given as per your task or it is related to your task. Okay. So integer recursion, we are giving the example of recursion. Just I have given a name recursion. After that, in a parenthesis, we have passed one parameter that is x. Okay. So whenever we are going to call this function, so you need to just call the name of the function which which is called with the help of name only and along with the actual parameters. For example, suppose here in the recursion function, if we have written
if x is equal to 0, so that function will return, the function will return. If the value of x is 0, it will return to the main program directly. If it is not, it means that, so if it is not, that means it will call the recursion function once again, recursion x minus 1. That means, for example, suppose the value of x is 5. What? The value of x is 5. So it is a recursion x value is 5. So if x is equal to 0, x 0 है क्या? नहीं है, तो वो क्या करेगा? रिटर्न होगा क्या? नहीं. It will come to this particular statement, then again recursion is called. So recursion, now what is the x value? X value is 5. 5 minus 1, 4. 4 हुआ x का value. Then again it will goes to up. यहाँ ऊपर जाएगा. ठीक है. Now the value of x is 4. अभी x का value कितना हो गया? 4. Then again लूप का एंट्री करेगा. Then again we have to check if x is equal to 0. No, x is not equal to 0. X is equal to 4. So again it will call the recursion function, recursion x minus 4. Now x value is 4. 4 minus 1 is 3. Now here x value is 3. Again ऊपर गया, again recursion call हुआ. Now x value is 3. Again it will come into the loop. If x is equal to 0, no, again recursion call होगा. That means 3 minus 1, that is 2. ओके. अगेन ऊपर जाएगा, अगेन रिकर्शन कॉल हुआ, अगेन नीचे आएगा. इफ x इक्वल टू 0 है क्या? नहीं है. अगेन नीचे आएगा रिकर्शन x minus 1, that means x value is 2. 2 minus 1, 1, that means x value is 1. अगेन ऊपर गया, इंटीजर रिकर्शन x value is 1 now. So if x इक्वल टू 0, no, then again रिकर्शन कॉल होगा. So x minus 1, so 1 minus 1 will get 0. फिर से ऊपर गया. नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 0. x का वैल्यू 0 है. सो अगेन लूप के अंदर एंट्री करेगा. चेक इफ x इज इक्वल टू 0. यस, कंडीशन इज ट्रू. x इज नाउ 0. x is now 0, that means it will directly return to the calling function. जहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ है, ये फंक्शन जहाँ से कॉल हुआ है, वहाँ पे ये मेन प्रोग्राम पे जाके जो भी ये पर्टिकुलर वैल्यू असाइन किया होगा, तो वैल्यू वहाँ पे पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर होगा. अदरवाइज एल्स आपका जो भी जहाँ से कॉलिंग हुआ था वहाँ पे वो जंप करेगा एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. सो लाइकवाइज हम लोग रिकर्शन को क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं. So basically, recursive algorithms are used to solve the certain problems very quickly and very easily. Okay, so we'll see one example. Now see here. So this particular program is written for to find out the factorial of entered number using a recursion concept. Okay, see. Let's see. Suppose here we have written a particular program to find out the factorial of entered number. So we have taken two variable, integer and f. N is for the number for which we want to find out the factorial, and f is used to store the factorial of the particular number. Now I have put the message print of enter the number whose factorial you want to find out, you want to calculate. So after that, scan up percentage of n. So user needs to enter one value. For that value, you have to find out the factorial. Suppose if I want to find out the factorial of 5, so the value of n is 5. Okay. Now, what we have written, f is equal to fact in a bracket n. F is equal to fact in a bracket n. It means that, what? F is equal to fact in a bracket n. What the value of n is? What the value of n is? Suppose 5. Suppose if the user have entered the value for n is 5. So fact of 5. What is the value of n? N is 5. It means that so value of n is 5. n का वैल्यू 5 है. सो फैक्ट ऑफ 5. सो यहाँ से ये जंप करेगा जहाँ पे फैक्टोरियल का डेफिनेशन लिखा गया है. यहाँ पे इसका डेफिनेशन है. सो ये यहाँ पे आएगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n is 5 नाउ. n का वैल्यू 5 है. Now we have to execute this function. If n is equals to 0, n का वैल्यू 0 है क्या? No, n का वैल्यू 5 है. ठीक है. So n is not 0, so it will goes to else part. यहाँ पे else के पास जाएगा. else के पास आने के बाद again he has to check if n is equal to 1. n का वैल्यू 1 है क्या? No, n का वैल्यू 5 है.
इफ अगर n का वैल्यू 1 होता था सो इट विल रिटर्न 1, इफ अगर n का वैल्यू 0 होता था सो इट विल रिटर्न 0, बट n इज नॉट 0, n इज नॉट 1, सो अगेन ये else के पार्ट else पे जाएगा, ठीक है। अगेन नाउ else पे जाने के बाद रिटर्न n into fact in a bracket n minus 1, so what is the value of n is 5, n का वैल्यू कितना है 5, so into fact, fact in a bracket, what value is the fact in bracket n minus 1, so n का value है 5, so 5 minus 1, 5 minus 1 4, 5 minus 1 4 हो जाएगा, 5 minus 1, so that means 5 into fact 5 minus 1 will get 4, that means अभी fact जब ये फंक्शन कॉल होगा, fact क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है, सो फैक्ट के अंदर n माइनस वन, एन का वैल्यू 5 था, 5 माइनस 1 4 हो गया, यहाँ से फिर से ये क्या करेगा, जंप करेगा कहाँ पे, ये फंक्शन की डेफिनेशन पे यहाँ पे जाएगा, नाउ द n वैल्यू इज नाउ 4, n का वैल्यू कितना है 4, ठीक है, n इज 4, नाउ अगेन इट विल कम इनटू द लूप के अंदर एंट्री करेगा, इफ n इज इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, एज n इज इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है, देन फिर से एल्स के पास जाएगा, रिटर्न n इंटू फैक्ट इंटू n माइनस 1, ठीक है, दैट मीन्स n कितना है, n अभी कितना हुआ, पहले n हमारा 5 था, ठीक है, 5 होने के बाद अभी n का वैल्यू कितना हुआ, 5 इंटू 4 फैक्ट ऑफ 4 माइनस 1, दैट मीन्स पहले 5 था आपका, बाद में आपका 4 हो गया, ठीक है, अभी फैक्ट इन ब्रैकेट n माइनस 1, सो n का वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1 3, फिर से यहाँ से ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, ठीक है, n वैल्यू इज नाउ 3, सो अगेन हम लोग लूप के अंदर जाएंगे, अगेन वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस लूप, सो इफ n इज इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, n इज इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है, देन अगेन s के पास जाएगा, देन अगेन n into factor n minus 1, so again what is the value of n now, n value is 3, n value is 3, ठीक है, after that fact n minus 1, n कितना है 3, 3 minus 1 2, फिर से ऊपर जाएगा, सो अभी n का वैल्यू 2 हो गया, नीचे आया 0 है क्या, n का वैल्यू नहीं है, 1 है क्या, नहीं है, देन अगेन रिटर्न n into fact into, देन n का वैल्यू अभी कितना हुआ 2 है, n का वैल्यू 2 है, ठीक है, सो 2 minus 1 1, दैट मींस फिर से ऊपर जाएगा, सो अभी n का वैल्यू कितना हुआ 1 हुआ, पहले 5 था, बाद में 4 हुआ, देन 3 हुआ, देन 2 हुआ, देन अभी 1 हुआ, सो नाउ सी, सो इफ n इज इक्वल्स टू 0 है क्या, नहीं है, n इज इक्वल्स टू 1 है क्या, यस, कंडीशन इज ट्रू, इट मीन्स दैट इट विल रिटर्न 1, बट बिफोर दैट पहले क्या हुआ, 5 into 4 को हमने कैलकुलेट किया, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स इसका जो भी आंसर आएगा 5 into 4 20, 20 into 3 16, 16 to 120, दैट मीन्स द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, फिर 120 हुआ, फिर से ऊपर गया, ठीक है, फिर से ऊपर जाने के बाद रिटर्न 1 हो रहा है, n का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, 1 इट इज 2 माइनस 1 1, यहाँ पे 1 आता है, जैसे रिटर्न 1 हो गया, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, यहाँ से फैक्ट का जो वैल्यू है, ये क्या रिटर्न किया, यहाँ पे 1 रिटर्न किया, दैट मीन्स ये इसका आंसर आपको क्या मिला 1 मिला है, ठीक है, फाइनली ये पूरा रिटर्न कहाँ पे जाएगा, ये पूरा मेन प्रोग्राम पे आपका रिटर्न हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे आपका रिटर्न होगा, ये यहाँ पे रिटर्न होगा, दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्ट ऑफ n, अब हमें क्या मिला, हमें 120 मिल गया, क्या मिला 120 मिल गया, दैट 120 इज असाइंड टू f, एंड फाइनली मैंने फैक्टोरियल प्रिंट करवाया, प्रिंट ऑफ फैक्टोरियल इज इक्वल टू परसेंटेज, सो f का वैल्यू हमने प्रिंट किया, क्योंकि f में हमारा फैक्टोरियल का वैल्यू स्टोर हुआ है, ठीक है, सो लाइकवाइज वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम फॉर factorial. So likewise, we have to use a recursion function. That means just you have written one function fact, and under that fact you have called the function fact itself. That means the function call itself is known as a recursion or the recursive function. So in this case, fact is a recursive function, or fact is a recursion function or the recursive function in this particular program. Okay. So hope you will understood the recursion concepts. Thank you one and all. Thank you. Thanks for watching this video. Thank you.